Hi guys, am I audible? Hello. Yes, ma'am. Okay. Okay, thank you. Because as I don't have my laptop with me today, I'm using the PC in one of the laboratories. Okay. So if you are not able to hear me or if you are not able to see the PPT, then please let me know. Because I'm using this system first time, so I'm not sure about that. Okay. So, so are you able to see the PPT, guys? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, thank you. Okay. Huh. So before starting the language system Verilog, as we don't have any introductory lecture, because in the introductory lecture we will be discussing about the course, that what you are going to study. The main two things which you are going to study is mainly testing and the verification. Now for the testing part, you will be learning the concepts like fault simulation, stuck at fault 0, stuck at fault 1, then ATPG generation and something like that, then memory testing. Okay. But for the verification part, you will be studying about the functional verification, formal verification. That means verification of what? Verification of your design. Now, to do the verification, obviously, you will be using one of the programming languages. Like, okay, for the embedded system, we use embedded C. To learn about the, okay, if you want to create the website, you should know the PHP language. In a similar way, if you want to do the verification of your hardware design, you should know the language known as system Verilog. Okay, as we don't have done any introductory lecture, so you guys don't know this, please don't worry about that. The first theory lecture will go through all the topics, like what are we going to study and why we are going to study the system Verilog, what is our teaching scheme and everything. So don't worry about that. This is the first introductory lab in which I will only give some idea about the system Verilog introduction. Okay, we will continue this lab also in the next week. So please don't worry about that. Today, the lecture is only the interaction between a teacher and a student, how much you guys know about that, okay? And some of the basic concepts which you should know if you don't know. So please don't worry about that. If you have any kind of questions or any kind of doubts regarding the subject or regarding the teaching scheme, it will be solved in the first theory lecture. Okay, so please don't worry about that. So this is, you can say that this is the introduction of our introduction lecture. So if you are not able to understand anything, don't worry about it. Okay, but this is one of the important courses if you want to take a job in a VLSI domain. Okay, there are two important courses in which you need to study or which you need to prepare competitively. Those two subjects are physical design and the verification. Okay, so this is the important topic. Even if I'm not being able to cover everything, I will give self study that you should know this, you should know that. If you are not able to understand, then you can ask me questions from the your self study notes. But self study is going to be very much important for this particular subject if you want to take a job. If you don't want to take a job in a VLSI domain, especially in verification domain, then it's okay, you just need to pass the subject, that's all. समझ में आ रहा है guys क्या बोला मैंने थोड़ी फास्ट इसलिए जा Yes, रही ma'am. because Yes, ma'am. now we know that where is your knowledge and where is my knowledge. I mean we have created a rapport, that's why मैं थोड़ी fast जा रही हूँ. Okay, but if you are not able to understand, then please let me know. Or अगर majority of you are thinking about taking a job in a verification domain, then also please let me know. तो मैं कुछ अलग तरीके से पढ़ाऊंगी. I mean, I will give you more self-study topics to cover. Okay, then I will also then I will design my quiz based on the interview questions asking for the verification. Okay, वरना फिर मैं easy रख दूंगी, इसीलिए आपको A grade मिल जाए जैसे embedded में हुआ था. Okay, so these are the two ways which we can go. If majority of you are planning a job in this verification domain, then please let me know. तो मेरे quizzes कुछ अलग तरीके से होंगे. Otherwise, the quizzes will be different. Now, can anybody tell me
that have you gone through the basic hardware description languages like VHDL and Verilog, या फिर वो क्या है ये पता नहीं है आप लोगों को? Ma'am, we have completed Verilog in previous Okay. semesters. Okay. So can anybody tell me what is the hardware description language? Like defining the hardware in terms of coding language or programming language. Okay. Okay. You have done Verilog, okay? Not VHDL. Verilog में क्या किया था आप लोगों ने laboratory में? What was the first laboratory for Verilog? What did you do? Ma'am, we have done the entire HDL bits in a website. We have done that HDL bits. From that, there are various code we have to write. हाँ वो कोड वो किसके कोड लिख रहे थे आप लोग? I mean HDL bits. If you can check the website, you will get an idea. Combinational and sequential like that. Combinational circuits, sequential circuits, and ये words आने चाहिए. If somebody asks what do we mean by hardware description language, that means that we are converting our digital blocks. That means what are our digital blocks? Digital blocks will be either combinational circuits or sequential circuits. Okay, we are writing the hardware language or we are writing the coding for our combinational and sequential circuit. That means we are writing the code for the half adder, we are writing the code for the full adder, we will be writing the code for the flip flop. Okay, so we will be this is the language which we will use to write the code about our sequential elements or combinational elements or our logic gates, anything. Okay, so कुछ ऐसे words आने चाहिए. Okay, so those hardware description languages are of mainly there were of two types. Okay, first one was VHDL language and the second one was Verilog language. Now even in the VHDL and Verilog language there was a concept called test bench, right? Whatever you were writing the code, you were verifying that code whether this will work as our golden results or not. To match our golden results, we were building the test bench. Okay, then why for the verification purposes we need the system Verilog? Okay, what do we mean by system Verilog language and why do we need to learn system Verilog language? Those kind of questions I will discuss somewhat, okay, in this particular lecture. Then what do we mean by verification and how can we verify our circuit, or what are some additional features present in the system Verilog language? Okay, so the system Verilog language, the main typical definition which you can say about the system Verilog language is it is the hardware description and verification language. Okay, your Verilog language and your VHDL language was only hardware description language. They were HDLs. Okay, now your system Verilog is HDVL. That means verification term has been added. I know कि टेस्ट बेंच में आप लोग वेरीफाई करते थे, बट यहाँ पे वेरिफिकेशन टेस्ट बेंच नहीं होगा, कुछ पर थोड़े बहुत फीचर्स ऐड हो जाएंगे. Okay, now it generally consists of unified design, modeling and verification. Then ma'am, what do we mean by design? Then design means the synthesis part of our any RTL code. Okay, that means your design. I think now you know, as you have done the Verilog, what do we mean by synthesis? What do we mean by RTL code? I think you guys will know. If you don't know, then please let me know. So design में क्या आएगा? Our synthesizable RTL code. फिर modeling में क्या आएगा? That means we are writing the code for some system model, okay, which should be used as a reference for our design. Or you can say that we are creating some reference block which we will be using for comparing our test bench, whether our code is, the functionality of our block is correct or not. Okay, and the verification is we are developing obviously the test bench that will verify any design. Now, if you want to learn about system Verilog, obviously there are so many tutorials, there are so many courses, there are so many free courses available, okay? But
If you want to learn about the system Verilog in detail, or you want to check whether it is correct or not, because sometimes they are making a mistake, then you can say that the whole language is based on the IEEE standard 800 to 2012. This is a document. If you are interested, I will share it with you guys. In this, everything, okay, like every particular thing which you can think of, like data types, arrays, procedural statements, flow control statements, processes, tasks, functions, randomizations, assertions, everything is included in this IEEE document. So you will be able to know that what kind of data types are available, and we should use which kind of data type during which kind of design. Okay, so if you want to learn about that, then I will share the document with you. The main thing I wanted to convey was that system Verilog is made up of so many languages, or you can say that it has taken the portion of the every few of the languages which was needed for the verification part. Okay, so if you want to do the design of obviously of any digital block, you will need a hardware description language. Okay, so it has taken the Verilog language for the synthesizable purposes. Now, for the classes and OOP concepts. Now, why these classes and OOP concepts are required? Okay, because you will get to know that when we are writing the test bench, it is okay if you are not synthesizing your test bench. Okay, it is generally a kind of programming which we are doing, whether it is our design is correct or not. Okay, so if you are writing the programming, that means we should be able to define the classes. Obviously, because in any object-oriented programming language, classes are the main advantages or the blueprint of our particular data structure. Okay, so that's why from OOP they have taken the concept of classes inside the system Verilog. Then for the two topics like randomizations and assertion, they have taken from the languages. One is OpenVera and the other one is HVL Vera. Okay. Then, ma'am, what do we mean by assertions? Okay, where assertions are used, then you can say that assertions are mainly used to validate the behavior of the design. Okay, what do we mean by validation of our the behavior of a design? That means we have to write some constraints or some points or some checkpoints during which we will be able to know whether this is correct or not. Or you can say that if you are speaking the English language, that means any high level languages. Okay, so you will be speaking in the sentences that if this is being matched, then our system or our block is correct or our block is verified. If these type of conditions are not being matched, or at this particular instance this particular answer should be there. Okay, so these kind of sentences our synthesizable tools won't be able to understand. Okay, so they have included one topic called assertions, which will convert our English sentences into the design specific form in which our tool can understand. Okay, so in a way you can think it like that, that it will convert our C language into a machine level language. Okay, in a way you can say it like that. It is not 100% correct, but at a broader concept wise, it is the thing which we do. Then, why the randomization topic was included? Then, to check any kind of designs, if we say that for this particular input values, I should get this output value. Okay, even though we are checking by truth table of half adder, full adder, if our design is half adder, full adder, okay, then it is not wrong. Okay, I'm not saying this is wrong, but if you want to think it like that in an environment, any kind of inputs are possible. Okay, so your test bench should be able to generate the random values, okay, for your variables. If they are able to generate the random values, and if we are able to verify that however the values are random, the output should be this, which is correct for this particular design, then you can say that you have created a robust test bench, or in a way a better test bench. Okay, that's why the randomization topic was included from your HVL Vera languages. So in a way you can say that your system Verilog
is a hardware description and verification language. What does it do? That means it will do the design part, it will do the modeling part, and it will do the verification part. And System Verilog is mostly based on the Verilog hardware description language, but it has some concepts like classes, randomization, and assertions from different kind of languages. Guys, ये बात समझ में आ रही है कि ऐसा लग रहा है कि हम ये पढ़ ही क्यों रहे हैं? Yes, ma'am. ओके, दिव्यश के अलावा नंदिनी, जूही, उत्सव. Yes, ma'am. I know, obviously now I know that पार्थ, वैभव, दिव्येश सब लोग पढ़ रहे होंगे और उन लोगों को समझ में भी आ रहा होगा. आप लोग क्या कर रहे हो गाइस? सो गए कि फिर समझ में नहीं आ रहा, ऐसा हो रहा है? ना मैम समझाएगी. Okay. See, this is kind of a motivation lecture, okay? Like why you need to study the System Verilog language. This is kind of a motivation lecture. Like अगर जॉब भी चाहिए होगा पर अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो फिर आप सोचोगे कि नहीं जाने दो, वेरिफिकेशन में नहीं, हम लोग फिजिकल डिजाइन या एसओसी चिप डिजाइन में कर लेंगे. ओके, सो दिस इज काइंड ऑफ अ मोटिवेशन लेक्चर विच अगर मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखा होगा तो आपको पता चलेगा कि अच्छा ऐसा होता है, और फिर मैं बोलूं कि ओके नाउ यू शुड गो थ्रू द ट्यूटोरियल्स फॉर द सिस्टम वेरिलॉग लैंग्वेज, देन मे बी यू विल गो थ्रू. ओके, I have tried to include all the little points as much as possible, but अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो प्लीज मुझे बता. Now आप लोग मैम कब से बोल रहे हो कि वेरिफिकेशन करना होता है, टेस्टमेंट्स लिखनी होती है, ये करना होता है, वो करना होता है, बट मैम हम लोगों को तो वो ही नहीं पता है कि वेरिफिकेशन किसको बोलते हैं. ओके, सो अगर वो ही नहीं पता है तो फिर थोड़े प्रॉब्लम होंगे. सो व्हाट डू वी मीन बाय वेरिफिकेशन? ओके, इन द मोस्ट सिंपलेस्ट टर्म्स यू कुड थिंक ऑफ, then you can say that verification means the complete validation of design functionality. Now what do we mean by complete validation of design functionality? That means whatever design you have created, for example the most basic functional block of any digital system, okay, logic gates. You have designed several logic gates, AND gate, OR gate, NOT gate, XOR gate, okay, you have created that particular design. Now whether in reality you have created the AND gate or not, that is the question. Okay, so if that is the question, how will we be able to know that this is the AND gate? Then obviously the most simplest answer will be, ma'am, let's check the truth table. Okay, so if the truth table of my design is matching with the truth table of the AND gate, that means my design is correct. Okay, then what is the truth table? Truth table will be, it will be giving you the complete idea of how your particular block will react when you give the different kind of inputs. Okay, but in a truth table, every possible scenario which is allowed for the input are already taken. So if you have created, for example, 2 input AND gate, that means 2 raised to 4 possible combinations, 0 0 0 and 0 1 0 1 1. Then all these 4 possible scenarios are already there in the truth table. Okay, so if you check this truth table, that means if it is behaving like that, if in 0 0 it is giving me 0, if it is giving me 1 in place whenever our input is 1 1, that means I have completely validated my design. Now here please take note that I have only said that this is the AND gate. Okay, if this AND gate, if I'm using in some other main blocks which is doing something else, then the verification of that AND gate is okay, but if verification of AND gate again it is behaving like AND gate or not, that will be something different. Okay, because we have to check whether the physical connections are okay or not. Like if you have used the data type known as REG instead of wire, then it won't work, even though your AND gate is working perfectly. Okay, right now I'm saying that by completely validating your design means, as it is only one AND gate, I'm not doing anything else with the for this AND gate. That means I will just check the truth table.
Okay, that is the most simplest definition of a verification. But if we are using this AND gate in somewhere else, then the verification will be changed somewhat. It won't be only the verification of the truth table. I mean, I guess it can be, because you will get an error saying that incorrect port or illegal port or something like that. But in a way, still. That means you have to make sure your design is bug free by verifying it in all aspects. That is all possible scenarios. Now, you will be stimulating your DUT. DUT means design and a test with all possible scenarios and comparing its output with golden results. Now, what do I mean by that? That means, let's say you have designed a half adder. Okay, so that means your device under test becomes half adder. Now, what is the stimulus generator? The stimulus generator will generate your input. Okay, because obviously in half adder, there will be two inputs, A and B, and there will be two outputs, sum and carry. Okay, so this stimulus generator will generate the two inputs, A and B, and it will be given to your half adder or device under test. So device under test, with the help of your input, will create the outputs known as sum and carry. Now, if you want to check whether the sum and carry are correct or not, how will you check? That means this stimulator generator will also give its input A and B to your reference model. Okay, so that means you are creating a model. That's why I said that in System Verilog, there will be one part called modeling. Okay, in that you have created your reference model. Okay, so from the reference model, you will also get two outputs known as sum and carry. Now there should be some comparison should be going on. Okay, so if you compare your sum and carry from your half adder output to the output of the reference model sum and carry, if they are correct, that means your logic is verified, or your design is bug free, or your verification is done, something like that. Okay, so this is the way which we are going to use to do the verification. Okay, now here the reference model or the comparison logic which we will be known as will be that you will be writing the test bench. Okay, and you will be using some additional topics in test bench called driver, scoreboard, agent, environment, something like that, and you will be performing your verification. Okay, what is that? Which we'll see in some time. Okay, don't worry about that. Now, as I said, that why are we using the system Verilog, and why are we not using simple Verilog and writing the test bench in Verilog? Okay, why are we not doing that? That is because we don't need to synthesize our test bench, because test bench is what? Test bench is simple verification. कि अगर मैं ये इनपुट दे रही हूँ तो ये आउटपुट आना चाहिए, आ रहा है? ओके, मुझे वो हार्डवेयर के फॉर्म में नहीं चाहिए. ओके, टेस्ट बेंच, नो, इट इज नो नीड. सिर्फ वो सिंपल प्रोग्राम ही है. अगर वो प्रोग्राम मुझे डिजायर्ड आउटपुट दे रहा है, दैट मींस माय ब्लॉक इज करेक्ट, और माय ब्लॉक हैज बीन वैलिडेटेड, और माय डिजाइन इज बग फ्री, व्हाटएवर यू वांट टू से. Okay, so if you don't want to synthesize the test bench, then you don't need to use the hardware description language. Okay, then you can use your programming concepts like randomization, classes, or assertions, or something like that. And if you want to use that, that means you have to create a new language known as System Verilog. So obviously System Verilog is heavily based on your Verilog languages, but because of this particular point, that we don't need to synthesize the test bench, or it is much more of a programming task, we can say that we should be able to use a different kind of language like the System Verilog language. Okay, so that we can create our test bench with more functional coverage, or more additional functionality like assertions, classes, etc., which can make or which can support the most complicated testing procedure you can think of. Okay, which Verilog won't be able to provide. That's why we are using System Verilog language and not Verilog language for the verification part. Now, obviously, there are some people who will say that, ma'am,
अभी तो इंडस्ट्री में हम लोगों को ओवीएम यूवीएम ही पढ़ाते हैं. मतलब अगर टेस्ट बेंच क्रिएट करनी है देन वी हैव टू यूज ओवीएम एंड यूवीएम बेस्ड टेस्ट बेंचेस. तो हम लोग सिस्टम वेरिलॉग क्यों पढ़ रहे हैं? ओके, obviously you will think it like that, but you should be aware that UVM, which is for universal verification methodology, is the structured system verilog. Okay, so even though UVM language is replacing the system verilog language in the industry, but you should know the system verilog. Okay, because if you don't know system verilog and if you will start a Udemy course of writing UVM test benches, then what will happen is that you won't be able to understand the blocks of the UVM languages. Okay, that will be like, okay, ये ब्लॉक हम लोग ये फंक्शन परफॉर्म करने के लिए लिखते हैं, बट ये ब्लॉक कैसे लिखा जाता है वो आपको पता नहीं चलेगा, बिकॉज यूवीएम इज द स्ट्रक्चर्ड सिस्टम वेरिलॉग. ओके, सो सिस्टम वेरिलॉग तो आना ही चाहिए इफ यू वांट टू नो इवन योर ओवीएम यूवीएम लैंग्वेजेस व्हिच आर बीइंग यूज्ड राइट नाउ इन इंडस्ट्री. ओके, सो ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं दैट व्हाई वी शुड अंडरस्टैंड द सिस्टम वेरिलॉग, और हम लोगों को लॉजिक डेटा टाइप क्यों पढ़नी चाहिए, और हम लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासेस क्यों पढ़ने चाहिए. ओके, वो इसलिए पढ़ना चाहिए, अदरवाइज UVM, whenever you are writing the test bench, it will be something like, हाँ ऐसा करना पड़ता है. I don't know क्यों ऐसा करना पड़ता है वो मुझे नहीं पता है. Okay, so क्यों ऐसा करना पड़ता है, that answer will be based on your system verilog. Okay, that's why before starting UVM languages, you should start with the system verilog. Now, how many kinds of features which I was talking about? Okay, then that means your program or the module block. Now I think you guys are aware of the terminology called entity, process block, or your module or end module or something like that. You will be able to understand what I mean. Okay, so that means inside your module there will be so many topics like interface, randomization, OOP support, assertions, coverage support, and new types of data types known as logic. Now, what is the difference between your REG data type versus logic? Because in Verilog you will be obviously using REG and wire data type, right? So we will also discuss that particular point as well. And we already discussed the randomization and the OOP support. Now, what do we mean by interface? Interface is nothing but your group of signals. Okay. So your group of signals is known as interface. जो हम लोग interface word use करते थे, वही interface वही use करके मैंने interface functionality ऐसा लिखा है. That means group of signals. Assertions हम लोगों ने देखा कि हम लोगों को क्यों use करना पड़ता है, because tools जो language understand कर सके, not the English language sentences. That's why we will be using assertions. And ये सब कुछ जो भी है, classes, new data types, coverage, assertions, process blocks, interfaces, whatever which you are thinking, we will be using all of this to write our module block. Okay, so that means एक ही मॉड्यूल होता है. ओके, टॉप लेवल मॉड्यूल. टॉप लेवल मॉड्यूल के इनसाइड हम लोग छोटे छोटे मॉड्यूल्स बनाते हैं टेस्ट बेंच लिखने के लिए. ओके, so this is not something like you will be designing different kind of modules और फिर एक combine होके एक टेस्ट बेंच बनेगा. No, not like that. Okay, there will be one top level module और उसके इनसाइड सारे मॉड्यूल्स होंगे. Guys, समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. समझ में आ रहा है ना? Okay, good. Now, what do we mean by system verilog for verification? ये simple repetitive ही है. Test manager verification is used to check the functional correctness of the device under test by generating and driving a predefined input sequence to a design, capturing the design output and comparing with respect to the expected output. Okay. तो आप लोगों ने जब वेरिलॉग लैंग्वेज सीखी थी तब आप लोगों ने टेस्ट बेंच जैसा कुछ डिजाइन किया था फॉर एनी सिंपल ब्लॉक्स लाइक हाफ एडर, फुल एडर, या ऐसा कुछ किया था गाइस? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी, बिकॉज व्हाइल राइटिंग द टेस्ट बेंच
how will you write your test bench? Generally आप लोगों ने क्या किया होगा, आप लोगों ने for example a और b, let's take a and b to be 0 0 or 0 1, और फिर आप लोगों ने ऐसा बोला कि wait for few seconds, right? Then I'm giving input as 1 0, wait for few seconds, 1 1, wait for few seconds, something like that. और फिर आप लोगों ने डिजाइन को सिमुलेट किया होगा और चेक किया होगा कि 1 0 पे आंसर 1 और 0 आना चाहिए, which is coming or not, और 1 1 के लिए आंसर 0 और 1 आना चाहिए for half adder, okay, for half adder रूल वेरिएबल है. सो अगर आ रहा है कि नहीं, सो वट एवर प्रोसीजर आप लोगों ने किए, मैंने सिर्फ इंग्लिश सेंटेंसेस लिखे हैं उसके लिए, ओके. नाउ टेस्ट बेंच, ओके, बट सिस्टम वेरिलॉग की टेस्ट बेंच को हम लोग कैसे बनाते हैं, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज समवट न्यू, ओके. देन यू कैन से दैट टेस्ट बेंच और वेरिफिकेशन एनवायरनमेंट इज अ ग्रुप ऑफ क्लासेस और कंपोनेंट्स, ओके. आप लोगों ने सी लैंग्वेज तो पढ़ी होगी, आई नो, बट आप लोगों ने C++ पढ़ी है कि नहीं? यस और नो गाइस? Yes, ma'am. No, ma'am. We have studied Java instead of the C++. ओके, तो पर जावा में भी क्लासेस तो आते ही होंगे ना. आई जस्ट वांटेड टू नो दैट डू यू अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय क्लास? Yes, ma'am. ये क्लास क्या होता है पता Yes, है? ma'am. ओके, सिर्फ एक को ही पता है क्लास क्या होता है या सब लोगों को पता है क्लास क्या होता है? ओके, डोंट वरी. इन अ वे यू कैन थिंक, ओके, बहुत बेसिक डेफिनेशन दे रही हूँ आप लोगों को. ऑब्वियसली C# या कुछ ऐसी लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी उसके लिए फॉर योर OOP concepts, but in a way you can say that a class is your blueprint. A class is a blueprint of your design or your object, okay. Now what do we mean by blueprint for my object or the design? That means a particular data structure, right? Because डेटा तो बहुत सारा होता है, आपने कौन सा डेटा लिया है, आपने कौन सी डिजाइन क्रिएट की है, इट डिपेंड्स ऑन दैट. सो क्लास क्या करता है, सिर्फ उसकी ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करता है, ओके. और ये क्यों हम लोगों को क्लास का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट होता है? बिकॉज हम लोग पॉइंटर्स क्रिएट करने के लिए, ऑब्वियसली हम लोग जो फंक्शंस क्रिएट करते थे और फिर पॉइंटर्स क्रिएट करते थे, तो उसके लिए क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स बहुत इजी हो जाते हैं. वी कैन इजीली डिलीट इट, वी कैन इजीली एक्सेस आवर पर्टिकुलर क्लास और ऑब्जेक्ट, ओके. तो हम लोगों का प्रोग्रामिंग के टर्म्स में थोड़ा बहुत इन अ वे रिलैक्सेशन मिलता है, ओके. सो हम लोग ऐसे टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट्स यूज करते हैं. But different types of classes will be doing a different kind of functionality, right? Let's say this is a class for you can say that vehicular, okay. तो उसमें सारे vehicular components के examples होंगे, okay, ना कि कोई educational related components, okay. So different classes will be doing its own operation, okay. So पर मैम ये हम लोगों को कैसे लाइक यूजफुल होने वाला है क्लास का कंसेप्ट, ओके. देन यू कैन थिंक इट इन टर्म्स ऑफ लाइक that even our test bench is made up of so many different kind of components, okay. That means what different kinds of components, that is generating stimulus, driving, monitoring, etc. एंड ये सारे क्लासेस डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लासेस होंगे. जैसे मुझे एक ब्लॉक होगा जो सिर्फ जनरेट कर रहा है मेरा इनपुट, एक ब्लॉक होगा जो उसका बस काम ही वही है कि जो जनरेट हो रहा है उसको लेके मुझे मेरे एनवायरनमेंट तक देना है कि ये भाई जनरेट हुआ है, ओके. सो इट विल बी ड्राइविंग योर इनपुट्स. द अदर टास्क विल बी, इट विल बी मॉनिटरिंग योर रैंडम वेरिएबल्स व्हिच आर बीइंग जनरेटेड, ओके. सो सारे के सारे कंपोनेंट्स के कुछ डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस हैं. सो वी कैन से दैट हम लोग उसके सारे डिफरेंट क्लासेस डिफाइन कर सकते हैं. That this is the class of a monitor, this is the class of a generator, this is the class of an environment, okay, which will be performing its own task. That's why your OOP concept was needed, like classes in your system Verilog, because हम लोग टेस्ट बेंच ऐसे क्रिएट करने वाले थे इसीलिए. तो मैम वो सारे क्लासेस कौन से हैं, ओके. दैट मीन्स फर्स्ट इज योर ट्रांजैक्शन, ओके.
हम लोग ट्रांजैक्शन लेवल ब्लॉक बनाएंगे। तो मैम ट्रांजैक्शन लेवल ब्लॉक क्या करेगा? देन इट विल डिफाइन योर पिन्स। ओके, इनपुट आउटपुट टोटल पिन्स कितनी है, उसमें से कितनी पिन इनपुट की है, कितनी पिन आउटपुट की है। इन अ वे यू कैन थिंक इट लाइक दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन योर transaction, which will be declare your fields. Okay, so you in a way आप लोग जो पोर्ट डिक्लेरेशन करते थे ना, वो वाला पार्ट ट्रांजैक्शन करता है, ऐसा आप लोग सोच सकते हो। ओके, देन दी generator, as the name suggests, it will create and randomize the transaction class and it will send it to your driver. तो ड्राइवर का भी, सो दैट मीन्स ट्रांजैक्शन एक अलग टाइप का क्लास हुआ, जनरेटर एक अलग टाइप का क्लास हुआ, बिकॉज उस दोनों के फंक्शनैलिटी अलग अलग है। नाउ ड्राइवर क्या करेगा? It will receive the stimulus from your transaction, that is from your generator, and it will drive your input, okay, to your transaction into the pin level, that is your design under test. तो फिर मैम मॉनिटर क्या करेगा? ओके, मॉनिटर एज द नेम सजेस्ट, इट विल ऑब्जर्व योर पिन लेवल एक्टिविटी, ओके, ऑन इंटरफेस सिग्नल्स एंड कन्वर्ट्स इनटू पैकेट लेवल व्हिच इज सेंट टू द कंपोनेंट्स सच एज स्कोरबोर्ड। पर आप लोग अभी ये वाला पार्ट समझ नहीं पाओगे, पैकेट लेवल व्हिच इज सेंट टू द कंपोनेंट्स सच एज स्कोरबोर्ड। ओके, सो इन अ वे यू हैव टू थिंक कि ओके, पिन्स की जो एक्टिविटी है वो ऑब्जर्व करने के लिए हम लोगों ने एक डिफरेंट क्लास को डिफाइन किया है, उसका नाम हमने मॉनिटर रखा है। ओके, now there is another class called agent. वो agent क्या करता है? Then agent is a container class which groups the classes. Okay, पर कौन से क्लासेस को ग्रुप कर रहा है वो? जनरेटर, ड्राइवर और मॉनिटर, तीनों को। ओके, वो तीनों को कंबाइन करेगा और इट विल गिव एन इंटरफेस और अ प्रोटोकॉल। तो फिर मैम स्कोर बोर्ड क्या करेगा? बिकॉज इन अ वे आप लोगों को पता था कि ये तीनों कुछ कंबाइन करके हम लोग कुछ करेंगे। देन scoreboard will receive data items from monitors and compares them with the expected values. कोई कंपैरिजन लॉजिक वाला पार्ट भी तो होना चाहिए कि जो डेटा अभी आ गया है उसको कंपेयर करना है हम लोगों के गोल्डन रिजल्ट से। ओके, कि भाई ये जो रिजल्ट आ रहा है वो सही है कि नहीं है। ओके, तो कंपैरिजन के लिए हम लोग डिफरेंट क्लास को डिफाइन किया है, उसने हम लोगों को नाम दिया स्कोरबोर्ड। नाउ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट क्या है? इज अ कंटेनर क्लास फॉर ग्रुपिंग हायर लेवल कंपोनेंट्स। ओके, हायर लेवल कंपोनेंट्स मतलब हम लोगों ने फंक्शनल ब्लॉक लिखे थे, जनरेटर, एजेंट, ड्राइवर, वो सब क्या कर रहा था? कोई मॉनिटर कर रहा था, कोई जनरेट कर रहा था, कोई यहां से लेके वहां तक स्टिमुलस को भेज रहा था, वो सारे फंक्शनल ब्लॉक्स थे, छोटे छोटे थे। फिर हम लोगों ने दो और क्लासेस किए विच वाज द कॉम्बिनेशन। एक था कि हम लोग कंपैरिजन के लिए यूज कर रहे थे और एक था हम लोगों का एजेंट जो ये सारे छोटे छोटे ब्लॉक को कंबाइन करके एक बड़ा ब्लॉक बना रहा था। तो एनवायरनमेंट क्या है? ये दोनों ब्लॉक को कंबाइन करके हम अगर हम लोग एक हायर क्लास बना रहे हैं उसको हम लोग एनवायरनमेंट बोल रहे हैं। ओके, तो यहां तक हम लोगों को पता है कि ये छोटे छोटे कंपोनेंट्स होंगे विच वी नीड टू डिजाइन बिफोर डिजाइनिंग द एंटायर टेस्ट बेंच। ओके, सो आप लोग जो वेरीलॉग में जो टेस्ट बेंच डिजाइन कर रहे थे ना उसको प्रोग्राम बोलते हैं, पर ये सब मैंने छोटे छोटे कंपोनेंट्स बोले उसको क्लास बोलते हैं। ये बात समझ में आ रही है गाइस कि यहाँ पे टेबल में मैंने टेस्ट को प्रोग्राम लिखा है और सारे बाकी सारे जो कंपोनेंट्स है, ट्रांजैक्शन, जनरेटर, ड्राइवर, मॉनिटर, एजेंट, स्कोरबोर्ड, ये सारे में मैंने ऐसे क्लास, टाइप इज अ क्लास ऐसा क्यों लिखा है और टेस्ट में टाइप इज अ प्रोग्राम ऐसा क्यों लिखा है? ये बात समझ में आ रही है गाइस? आई नो कंपोनेंट समझ में नहीं आ रहे होंगे, इसीलिए मैंने बोला था कि इवन इन नेक्स्ट वीक आई विल कंटिन्यू दिस सिस्टम वेरीलॉग टॉपिक इन विच आई विल गिव यू वन एग्जांपल कॉल्ड हाफ हेडर। और हाफ हेडर के लिए हम लोग टेस्ट बेंच लिखेंगे, आप लोगों वाली नहीं, ये वाली कि ड्राइवर कैसा होता है, एजेंट कैसा होता है, सब आप लोगों को पता चलेगा। प्लीज डोंट वरी अबाउट दैट। अगर डायरेक्ट डिटेल नहीं पता चल रही है तो बस थोड़े बहुत इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स पता होने चाहिए। इतना गाइस समझ में आ रहा है? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, ma'am. Sorry. Okay. So
आई होप आप लोगों को ये भी पता चल गया कि यहाँ पे मैंने टाइप में प्रोग्राम क्यों लिखा है और बाकी सारे में टाइप क्लास क्यों आएगा। बिकॉज जो टेस्ट है वो ऑब्वियसली ये प्रोग्राम है। प्रोग्राम क्यों है? बिकॉज हम लोग सारी की सारी जो प्रोसेसेस हैं, like configuring the test bench or initiating the test bench or even how to get our stimulus generator, that means our input, how to drive our inputs, वो सब कुछ टेस्ट में ही आएगा, टेस्ट वाले ब्लॉक में। ओके, सो इट इज अ प्रोग्राम, इट इज नॉट अ क्लास। वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करता है, वो कॉम्बिनेशन जो सब कुछ हम लोगों ने किया है ना, अलग अलग जो स्पेसिफिक ऑपरेशन, उसका मेन जो प्रोग्राम होता है वो टेस्ट बोला जाता है और उसमें हम लोग लिखते हैं। तो मैम ये टेस्ट बेंच टॉप क्या है? ओके, तो उसका मतलब क्या होता है? वो क्लास क्यों है मैम? वो प्रोग्राम क्यों नहीं है? वो प्रोग्राम इसीलिए नहीं है बिकॉज वो एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑपरेशन परफॉर्म करता है। वो स्पेसिफिक ऑपरेशन क्या है कि मेरी जो टेस्ट वाली फाइल है, ओके, और मेरी जो डिवाइस अंडर टेस्ट है, वो दोनों को कनेक्ट करता है। ओके, और उसके सारे इंटरफेसेस है वो चेक करता है। सो दैट मीन्स इट इज डूइंग अ स्पेसिफिक ऑपरेशन कि हर बार ये वही करेगा। जो टेस्ट है वो तो डिजाइन के ऊपर डिपेंड होता है और वो सारा हम लोगों ने जो कंपोनेंट्स बनाए वो सारे के सारे कॉम्बिनेशन करके हम लोग टेस्ट बेंच को कॉन्फ़िगर करेंगे, उसको हम लोग इंटरफेस करेंगे, हम लोगों का स्टिमुलस जनरेटर से जो इनपुट आ रहा है वो सब कुछ। ओके, सो वो हर बार अलग अलग होगा, राइट? ऑब्वियसली कभी हाफ एडर होगा, कभी फुल एडर होगा। समटाइम्स इट वोंट बी अ सिंपल लाइक हाफ एडर और फुल एडर, हम लोग एएलयू भी बना सकते हैं, राइट? सो वो इन अ वे इट इज अ होल प्रोग्राम। बट ये जो टेस्ट बेंच टॉप है वो स्पेसिफिक ऑपरेशन है कि वो हर बार वही करेगा। मेरा ड्यूटी और मेरी टेस्ट बेंच, वो दोनों को कंपैरिजन और कनेक्शन के लिए हम लोग टेस्ट बेंच टॉप लिखते हैं। इसीलिए ये वाला क्लास है और टेस्ट वाला प्रोग्राम है। काफी सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं इसमें, दैट्स व्हाई। ये बात समझ में आ रही है गाइस? कि बहुत समझ में नहीं आ रहा है? मैम ओके, अगर थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है देन इट्स फाइन। हम लोग नेक्स्ट वाले लैब में देखेंगे जब हम लोग हाफ एडर या ऐसा कुछ डिजाइन करेंगे। ओके, मैम वी आर गोइंग टू यूज Xilinx only or any other software? वो मैं अभी सोच रही हूँ कि ये वाले टॉपिक के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं। ओके, मतलब काफी सारे लोग ईडीए प्लेग्राउंड भी यूज कर रहे हैं, फिर काफी सारे लोग मॉडल सिम भी यूज कर रहे हैं। सो मैं सोच रही हूँ कि कौन सा वाला इजी पड़ेगा। ओके, बिकॉज आई डोंट नो, मैं सब लोगों से पूछ रही हूँ अभी कि जो इंट्रोडक्टरी क्लास होता है वो मुझे किस में पढ़ाना चाहिए, आइदर ईडीए प्लेग्राउंड में पढ़ाना चाहिए या फिर मॉडल सिम में या फिर कोई और ऑनलाइन सिमुलेटर है विच इज comparatively easy. Okay, so I'm still I've not still decided yet. Otherwise तो मैंने आपको example half adder का दिखा दिया होगा। Okay, so I'm still researching about that. जो भी मुझे अच्छा लगेगा, जो भी references जो अच्छे वाले मुझे मिलेंगे वहां से हम लोग करेंगे। Okay, so I'm sorry about that, I've still not decided, but जो भी होगा वो आप लोगों ने यूज ही किया होगा। अगर ईडीए प्लेग्राउंड या ऐसा कुछ मैं लूंगी जो मैंने यूज नहीं किया है तो हम लोग एक बेसिक ट्यूटोरियल भी लिख लेंगे कि कैसे करना होता है। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो दिस इज द प्रोसेस व्हिच यू आर गोइंग टू फॉलो इफ यू आर डूइंग द वेरिफिकेशन पार्ट। ओके, वेरिफिकेशन पार्ट में आप लोगों को, इफ यू आर अ वेरिफिकेशन इंजीनियर, तो आप लोग करते क्या? Okay, then the most simplest answer is you are writing the test bench, nothing else. You are just writing the test bench. But जो test bench है, that is the complex structure. Okay, because आप लोग, for example, let's say design engineer has created a ALU. Okay, he has created a 8-bit ALU. Now it's your job to verify its functionality. Okay, तो अगर आप लोगों को उसका फंक्शन वेरीफाई करना है तो कोई एक होगा जो स्कोर बोर्ड बनाएगा, कोई एक होगा जो एजेंट बनाएगा, कोई एक होगा जो मॉनिटर बनाएगा। ओके, और फिर सारे कंपोनेंट्स डिजाइन हो जाने के बाद हम लोग एक टेस्ट बेंच लिखेंगे और फिर उसकी फंक्शनैलिटी वेरीफाई होगी। आप लोगों को ये गाइस प्रोसेस समझ में आ रही है? यस और नो?
कि ये Yes, ma'am. प्रोसेस समझ में नहीं आई? Yes, ma'am. You should know the process first. Okay, process हमारे दिमाग में clear होनी चाहिए. How to do the process, that is the course which we are going to study for next 2.5 months or 3 months. Okay, so how to do the process, that is okay, but first you should know what is your process. So this is your process. If you want to verify, that means you will write the test bench. By writing the test bench, that means you will be designing the different kinds of components. Then in the end, you will be verifying the functionality of that particular design. Okay, so this is the function which you are going to follow everywhere, wherever you go. ओके, ऑब्वियसली जब डिजाइन में कॉम्प्लेक्सिटी आएगी तो ऑब्वियसली वेरिफिकेशन वाले पार्ट में भी कॉम्प्लेक्सिटी आएगी. ओके, सो आई एम नॉट सेइंग कि इजी होगा, बट प्रोसेस ये होगी. नाउ let's at least discuss one topic today. Okay, basic points में मुझे बहुत सारा टॉपिक कवर करना था बिकॉज डेटा टाइप के क्लासिफिकेशंस होते हैं. नेट, व्हाई डू वी यूज नेट और व्हाई डू वी यूज वायर, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स. एज वी आर डिस्कसिंग द ओओपी, हम लोगों को ऑब्जेक्ट्स भी पता होने चाहिए. बट एटलीस्ट लेट्स डिस्कस वन पॉइंट टुडे. ओके, आफ्टर दैट यू आर फ्री टू लीव. Let's at least discuss the logic. Okay, now what is this logic? Logic is a new kind of data type which was added into our system Verilog database. Then can anybody tell me what is the counterpart of the logic in the Verilog? Basic Verilog की data types आपने कौन सी यूज की थी, कोई मुझे बता सकता है? Bit. Okay, विथ पर किसके लिए? आई मीन आई नो दैट 0 to 7, आई मीन 8 बिट्स के लिए आप लोग विथ 0 to 7 लोगे, या फिर 4 बिट के लिए 0 to 3 लोगे. ओके, लॉजिक वेक्टर्स यू विल डिफाइन, दैट इज अ गुड थिंग. बट आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक, ओके लेट्स से एंड गेट डिजाइन कर रही हूं मैं. ए बी एंड जेड, ए एंड बी आर इनपुट, जेड इज द आउटपुट. तो ए एंड बी इनपुट के लिए कौन से डेटा टाइप्स यूज करोगे आप लोग? इंटीजर. Okay. No. Okay, let's back up a little bit. Okay, don't worry about that if you don't know the type of what data type I am talking about. आप लोग एंड गेट बना रहे हो. ओके, सो इफ आप लोग अगर एंड गेट बना रहे हो, दैट मीन्स यू आर डिजाइनिंग द हार्डवेयर. दिस इज नॉट अ सॉफ्टवेयर एनीमोर. कि सी लैंग्वेज में आप लोगों ने कुछ लिखा और कंपाइलर ने कंपाइल किया और मुझे आउटपुट मिला. नो, मतलब आप लोगों को जो ब्लॉक बनाना है, दैट मीन्स यू हैव टू डिजाइन द आईसी व्हिच यू आर एबल टू सी, व्हिच यू आर एबल टू टच. समझ में आ रहा है गाइस कि ये बात समझ में नहीं आ रही है? आई नो एज हम लोग काफी सारे सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं, सॉफ्टवेयर लैंग्वेजेस पढ़ रहे होते हैं, तो ये वाला पार्ट हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. Think in terms of hardware, guys. So that means if you are designing an end gate, that means you are designing an IC. वो हार्डवेयर बन रहा है. ओके, तो अगर वो हार्डवेयर बन रहा है, that means हम लोग फिजिकल कनेक्शंस कर रहे हैं. यस और नो गाइस? ये सेंटेंस समझ में आया? Yes, ma'am. Okay, so that's why if I say that I'm just designing an AND gate जिसके इनपुट है A and B या Z, तो हम लोग कौन सी डेटा टाइप यूज करेंगे? That's why we won't be using an integer. I know the value will be 0 and 1, okay, as we are designing a digital circuit. But that's why it is not an integer. आप लोगों ने रेज, वायर, नेट ऐसा कुछ यूज किया था वेरीलॉग में? यस और नो? यस मैम. याद आया गाइस? यस और नो? Yes, ma'am. इसमें मुझे बहुत सारे यस चाहिए, बिकॉज इन अ वे मुझे पता चलेगा Yes, कि ma'am. मुझे नेक्स्ट पीपीटी में Yes, क्या ma'am. इंक्लूड करना है. ओके, वेरी गुड. सो दैट मींस that in Verilog, either you were using REG or you were using wire. Okay, but in system Verilog, reg and wire has been replaced by a different kind of data type known as logic data type. ये सेंटेंस समझ में आया गाइस?
Yes or no? Ma'am, can you repeat? ओके, वेरीलॉग में जो डेटा टाइप थी रेज या तो वायर ऐसा कुछ, वो सिस्टम वेरीलॉग में रिप्लेस होके लॉजिक डेटा टाइप बन गई है। समझ? ओके, ये वाला सेंटेंस, दिस इज अ सेंटेंस। अभी ऐसा क्यों हुआ वो भी हम लोग देखेंगे। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट, बट दिस इज अ स्टेटमेंट विच यू नीड टू रिमेंबर कि अगर आप लोग पोर्ट डिक्लेरेशन कर रहे हो, ऑब्वियसली डिजाइनिंग वाला पार्ट भी सिस्टम वेरीलॉग में हो सकता है। सो इफ यू आर डिक्लेयरिंग योर पोर्ट्स, दैट मींस यू विल बी यूजिंग द डेटा टाइप नॉन एज लॉजिक, नॉट डेटा टाइप लाइक REG और NET और वायर और समथिंग लाइक दैट। ओके, वो याद रखना है। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सम बेसिक पॉइंट्स में डिस्कस करवाऊंगी, बाकी आप लोगों को सेल्फ स्टडी खुद से ये लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। मतलब बेसिक वाला पार्ट, आई मीन टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस क्या होता है, फिर फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट्स है तो वो इफ एंड एल्स क्या होता है, केसेस क्या होता है, फिर जंप स्टेटमेंट क्या होता है। ऑब्वियसली आप लोगों को ये सब आता होगा, पर फिर भी एक बार सिस्टम वेरीलॉग के लिए ये पढ़ना पड़ेगा। और हम लोग एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे जैसे ड्राइवर
Guys, am I audible? Am I present in the meeting now? Hello. Yes, ma'am. ओके सो मुझे पता नहीं हम लोग कहाँ तक पढ़े थे. आप लोगों को ये वाला पॉइंट समझ में आ गया था, 4 स्टेट वैल्यू और 2 स्टेट वैल्यू? गाइज आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो. आई मीन ऑब्वियसली डिजिटल के लिए 2 इनपुट आपको पता ही थे, 0 and 1. आर यू अवेयर ऑफ द इनपुट नोन एज x and z? यस और नो गाइज? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. हाँ, तो हम लोगों ने जब वेरिलॉग की डेटा टाइप पढ़ी थी तब आप लोगों ने पढ़ा था कि इफ यू आर यूजिंग रेज दैट मींस इट इज अ 4 स्टेट वैल्यू. रजिस्टर में 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, x भी आ सकता है, z भी आ सकता है. ओके, आप लोगों ने ऐसे पढ़ा था. सो इफ यू आर यूजिंग लॉजिक इंस्टेड ऑफ रेज दैट मींस इट इज कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट 2 स्टेट वैल्यू. उसका क्या मतलब है? दैट whether it is 0 then it obviously logic 0 मतलब logic 0. वो सिंपल है. लॉजिक 1 मींस लॉजिक 1. बट x और z को भी मैं लॉजिक 0 के टर्म्स में ही ले रही हूँ. ओके, इन माय लॉजिक डेटा टाइप. गाइस ये हम लोगों ने डिस्कस किया था, याद आया कि कब मैं आई लेफ्ट द मीटिंग? Ma'am, then Yes or no? then you were not there. We just started the discussion about this. Oh, okay. So that is the discussion कि x और z मतलब क्या? That means think in terms of hardware. Okay, hardware में it is not necessary because in software you can always mention okay this is 0 or this is 1. Okay, but hardware में ऐसा नहीं होता है. एनवायरमेंट की वजह से काफी सारे हर्डल्स आ सकते हैं. वो हर्डल्स कौन से होते हैं कि यू आर नॉट एबल टू, ऑब्वियसली 0 और 1 लेवल पे डिपेंड होता है. Obviously we will be thinking like okay this level till this level it is logic 0, you have to consider this as a 0 bit, and above this level you will be considered as a 1 bit. Okay, bit 1. So कभी कभी क्या होता है, you are not able to decide the level. Okay, आप लोगों को लेवल पता ही नहीं चल रहा है whether I should take logic 0 or whether I should take logic 1. और कभी कभी इसके अलावा भी क्या होता है, whether you take logic 0 or logic 1 it is stuck at a particular 0. Okay, कुछ भी करो, डोंट केयर कंडीशन, आउटपुट इट इज स्टक, आइदर इट इज स्टक एट 0 और आइदर इट इज स्टक एट 1. तो ऐसा भी हो सकता है. सो ऐसा हो सकता है, रेज में ऐसा पॉसिबल था. लॉजिक में हम लोगों ने क्या डिफाइन कर दिया कि 0 के लिए 0, 1 के लिए 1 और x के लिए भी हम लोग लॉजिक 0 ही कंसीडर करेंगे. दैट मींस इट इज अ फॉल्स कंडीशन. Even though it is a don't care, even though it can be 1, I am not focusing on that part. Okay, we are converting our x or input x to our logic 0. और कभी कभी अगर लोड बढ़ जाता है, ओके, समटाइम्स इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर वी से दैट ओ लोड हैज बीन इंक्रीज्ड, और एज द लोड हैज बीन इंक्रीज्ड क्या हो रहा है कि मेरी जो सर्किट है वो हाई इंपीडेंस में जा रही है. What do I mean by high impedance? Then in simplest term, high impedance means open connection, open circuit. Okay, simplest term ये वाला हम लोगों को चूज करना है. So as it is open connection, हम लोग Z के लिए भी equivalent state क्या लिखेंगे? Logic 0. Okay, even though you have studied 4 types of states for your data types, if you are using logic, there will be only 2 states, 0 and 1. ये वाला पार्ट समझ में आ रहा है गाइस? Yes, ma'am. ओके, तो ये हम लोग कौन किसके लिए डिस्कस कर रहे थे? लॉजिक वाली डेटा टाइप के लिए डिस्कस कर रहे थे. नाउ द डिफरेंस बिटवीन रेज एंड वायर. ओके, I am not sure whether you guys are aware of this particular question or not, but this is one of the important Verilog interview questions at my time. Okay, Verilog के लिए give me the difference between reg and wire. Okay, when will you use reg and when will you use wire? So whenever you are beginner in the hardware description language, you won't be able to understand the entire concept. Okay, तो इसके लिए हमारे प्रोफेसर क्या करते थे, एक रूल बना दिया था. If you remember, if you have designed the flip flop in Verilog language, okay, तो obviously आप लोगों ने process के बाद always block define किया होगा. उसमें आप लोगों ने लिखा होगा if you were designing the positive edge flip flop, deep type flip flop, you will be designing like always at every positive edge something, always at every negative edge something. Guys, मैं ये क्या बोल रही हूँ याद आ रहा है सब लोगों को? Yes or no? Yes, ma'am. Okay.
ऐसा नहीं है कि ना कि मैं ऐसे ही बोले जा रही हूँ और आप लोग ऐसे ही सुनते जा रहे हो। ओके, इट शुडंट बी द केस, बिकॉज इफ दैट इज द केस तो आप लोगों को मेरे क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, और अगर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया तो ये वाली पीपीटी समझ में नहीं आएगी फॉर दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट। ओके, तो आप लोग ऑलवेज ब्लॉक डिफाइन करते थे, लिखते थे, डिफाइन करते थे मतलब। तो ऐसा बाय डिफॉल्ट रूल क्या था कि इनसाइड द ऑलवेज ब्लॉक अगर आप लोगों को जो भी डेटा टाइप यूज करनी है, ऑब्वियसली यू विल बी यूजिंग REG, एंड आउटसाइड द ऑलवेज ब्लॉक यू विल बी यूजिंग द डेटा टाइप नोन एज वायर। नाउ सिस्टम वेरिलॉग में तीसरी टाइप की डेटा टाइप आ गई, लॉजिक। तो मैम नाउ दिस इज अ कंफ्यूजन, लॉजिक क्या होता है, रेज क्या होता है, वायर क्या होता है, कब क्या यूज करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओके, so अगर that is the case, then you should know how the Verilog data types have been started. Okay, that means you can say that the basic classification of Verilog data type means nets and variables. ये बात याद है सब लोगों को? Yes or no guys? Data types का classification Verilog में, कि ये वाला पार्ट याद नहीं आ रहा है? ओके, फिर से मैं चली गई क्या मीटिंग में से? हेलो? नो मैम, नो। ओके ओके, डोंट वरी, हाँ होता है। आई नो ऑनलाइन में आप लोग कितना याद रखोगे। सो लेट्स जस्ट डिस्कस। ओके, वेरिलॉग के डेटा टाइप के कुछ बेसिक पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं, उसके हिसाब से आप सब लोगों को याद आ जाएगा, और अगर याद ना आए तो एटलीस्ट प्रिपरेशन में तो लिखना ही लिखना। ओके, द डिफरेंस बिटवीन रेज एंड वायर। आई डोंट नो अभी इस टाइम पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं, बट एटलीस्ट ऑन अ सेफर साइड यू शुड प्रिपेयर दिस आंसर। सो वेरिलॉग की डेटा टाइप जनरली कैसे डिवाइड की जाती है? ओके, देन जनरली इट इज डिवाइडेड बिटवीन नेट्स एंड वेरिएबल्स। अरे मैम, नेट्स का मतलब क्या है और वेरिएबल का मतलब क्या है? दोनों की दोनों हम लोग ऐसे ही यूज करते हैं इंटरचेंजेबली। देन नो, यू कैन नॉट यूज वेरिएबल इंस्टेड ऑफ नेट और नेट इंस्टेड ऑफ वेरिएबल। ओके, इसीलिए तो ये क्लासिफाई किया गया है कि नेट्स और वेरिएबल्स, दैट मींस दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो नेट का क्या मतलब होता है? ओके, नेट की डेटा टाइप मतलब कैसी डेटा टाइप? तो इसीलिए आपको मैं बोल रही थी कि दिस इज अ हार्डवेयर गाइस, दिस इज अ हार्डवेयर नॉट अ सॉफ्टवेयर, प्लीज रिमेंबर दैट। अगर आप सिर्फ सॉफ्टवेयर यूज कर रहे थे तो वेरिएबल ही आएगा, नेट आएगा ही नहीं। But as you are using the hardware or you are designing the hardware, और हार्डवेयर डिजाइन करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर लिख रहे हो, that's why you have to think in terms of hardware. Okay, तो ऐसा भी हो सकता है that you are designing entity block A and entity block B, right? Verilog में entities define की होगी, yes or no guys? ये तो याद है entities ना? are there in VHDL. हाँ, okay. In these are there are मतलब modules. काउंटर पार्ट एंटिटी का जो भी है, आई एम टॉकिंग अबाउट Modules. Yes, yes, we have defined modules. Yes. So आप लोगों को याद है कि you are designing modules, okay, or you are designing the entities. So now, if you have to link two entities or the two modules, that means it is a physical connection between them, not a software connection. ये वाली बात समझ में आ रही है गाइस? Yes, ma'am. ये पता नहीं चल रहा है कि फिजिकल कनेक्शन होना चाहिए दोनों ब्लॉक्स में, एंटिटी और मॉड्यूल, मतलब ब्लॉक्स के बीच में फिजिकल कनेक्शन होना चाहिए। फिजिकल कनेक्शन मतलब क्या? कि वो कुछ वैल्यू स्टोर नहीं करेगा, मॉड्यूल ए की जो वैल्यू है वो मॉड्यूल बी में जा रही है। ओके, सो वो एज अ वायर की तरह काम कर रहा है। इट इज नॉट स्टोरिंग द वैल्यू or the input or the output, it is just providing the connection between the two physical entities or modules or the blocks. ये वाली बात समझ में आ रही है guys? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, Okay. Yes, ma'am. हाँ, तो ये जो हो रहा है ना, उसके लिए हम लोग वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। ओके, उसके लिए हम लोग नेट डेटा टाइप यूज कर रहे हैं। नेट डेटा टाइप के एग्जांपल क्या होते हैं? वो वायर वाला एग्जांपल। Okay, that is the Verilog wire. It is the most common data type. Okay, I don't think you have used try, vend or supply zero. Okay, nobody uses it in the introductory class. Okay, generally we use Verilog wire. Wire तो use किया होगा, yes or no guys? Wire use किया था Yes, कि नहीं? ma'am. हाँ, Yes, ma'am. Yes, हाँ, ma'am. तो वायर इसीलिए यूज किया था
because we were not storing any values. Okay, it was serving as the connection link or interface between the two modules or the entities. तो वो वाली डेटा टाइप को हम लोग वायर बोलते हैं. और पर ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे कनेक्शंस ही होते हैं. ओके, समटाइम्स इट इज नीडेड टू स्टोर द वैल्यू. Okay, you should be able to store the value and then you should be able to use whenever we are writing the next assignment statement. Okay, so if you are using that, तब आप लोग REG वाली डेटा टाइप यूज करोगे. So इसीलिए आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ऐसा रूल क्यों बनाया था हम लोगों ने कि ऑलवेज के अंदर हम लोग REG यूज करते हैं, बिकॉज वो वाला पार्ट हम लोगों को वी आर स्टोरिंग द वैल्यू लाइक टिल नेक्स्ट असाइनमेंट, राइट? कि अभी पॉजिटिव एज आई तो जब तक पॉजिटिव एज ना आए तब तक ये करना है, फिर नेक्स्ट पॉजिटिव एज आई तो ये हम लोग कनेक्शन प्रोवाइड नहीं कर रहे, इट इज होल्डिंग सम काइंड ऑफ वैल्यू. ओके, आई डोंट नो वेदर यू आर स्टोरिंग 0 or 1 बट यू आर स्टोरिंग समथिंग. so that's why we were using reg. but outside अगर हम लोग सिर्फ कनेक्शन ही प्रोवाइड कर रहे हैं, कनेक्शन इन टर्म्स ऑफ व्हाट, फॉर एग्जांपल मैंने 1 बिट एडर यूज किया, 1 बिट एडर डिजाइन किया, फिर मैंने 4 बिट एडर डिजाइन किया और 4 बिट एडर में 1 बिट एडर का यूज किया बिकॉज 4 बिट एडर मींस 4 1 बिट एडर्स. सो उसमें मैं कनेक्शन ले रही हूँ. ओके, कि इसका मुझे ये कनेक्शन लेना है तो दैट इज अ फिजिकल कनेक्शन, तो तब मैं वायर यूज करती हूँ. दैट्स व्हाई आउटसाइड द ऑलवेज ब्लॉक wires are used, inside the always block REG was used. इसीलिए हम सब लोगों को बोल रहे थे. थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है गाइस कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है? Understood. Yes, ma'am. जूही, नंदनी, उत्सव, Yes, ma'am. Yes, ma'am. पार्थ, मीत, Yes, are you ma'am. guys able to understand? Okay. Okay, very good. So now you understand when to use reg and when to use wire. Okay. So now in system Verilog, this reg and this wire has been replaced by new data type known as logic. Okay. So that means even if I want to declare my ports as an input or output, or even I want to declare my variables, that is inside my blocks, inside my always block, or I need to provide the physical connection between two entities. For everything, I will use only one kind of data type known as logic data type. अभी बात समझ में आई कैसे रिप्लेसमेंट हुआ है? Yes or no, guys? Okay. Let's see one example. If you are not able to understand even though by example, then I will try to make you understand by some other language or some by other point, by making some other point. Okay. Let's say you are designing a 1-bit module. As it is a very long, आप लोगों ने module design किया था तो मैंने ऐसा लिखा है, तो इसीलिए मैंने ऐसे screenshot कहाँ से लिए हैं. So module 1-bit ABZ. AB are input, Z is my output, and assign Z equals to A plus B end module. Guys, are you able to understand this? Yes or no? Now think in terms of Verilog code, guys. Am I present in the meeting? Okay, I am there, Guys, are you able to see the screen? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Let's say you are designing a 1-bit adder. तो 1-bit adder डिजाइन करने के लिए आप लोगों ने मॉड्यूल का नाम लिखा, फिर you are describing your input and output, then you are writing the assign statement. Why this assign keyword is necessary? ये वाला पॉइंट तो याद है ना गाइस आप लोगों को? ये वाला पॉइंट भूल गए आप लोग? In VHDL, I can always write Z less than or equal to A plus B or Z less than or equal to A and B. Okay. In Verilog, I have to write assign whenever I am writing something in terms of functionality. ये पॉइंट याद आया गाइस कि भूल गए आप लोग? Yes, ma'am. Very ma'am. एक ही यस आ रहा है गाइस.
सारे यस आने चाहिए if you remember. Yes, Okay, ma'am. Yes, if ma'am. you don't remember then it's fine. Okay, चलो तो ये वाला पॉइंट सब लोगों को याद है, इसीलिए मॉड्यूल एंड मॉड्यूल हो गया. Now I am designing a 4-bit adder using 1-bit adder. I can do that, right? I think you have studied this in your introductory class of digital logic electronics, DLD, right? That obviously you can create 4-bit parallel adder using 4 half adders. Yes or no, guys? Why I'm defining or why I'm trying to ask you this kind of question is because by this you will be able to understand where to use wire and where to use REG. Okay, as I'm using 1-bit adder to create 4-bit adders, that means for my output it is driving from my output port, which is Z. Okay, so that means I am declaring or this is a physical connection. As this is a physical connection, that means it is being driven from the instance output port. This data type should be wire. But for my A and B, these are my 4-bit inputs which I need to store, variable. I am using A and B as a variable. As I am using A and B as a variable, my data type is REG. Guys, ये डिफरेंस समझ में आ रहा है? Are you not able to grasp the concept? Ma'am, can you repeat for the wire? We understood about the register. हाँ. This wire, okay, that is my 4-bit adder output. Okay, if you remember the 4-bit, okay, if you remember your parallel adder circuit, okay, it is a 4 half adder blocks. As it is a 4 half adder blocks, there are 4 parallel inputs A, B, A, B, A, B, A0, B0, A1, B1, A2, B2, A3, B3. But your carry is being gone from this half adder 1 to half adder 2. It is serving as the 3-bit input, अगर आपको याद आ रहा है. So as this is the physical connection between 2 half adders, okay. So that means I am driving my out to create the output. I am driving my output from my 1-bit adder का जो output है वो. That is a physical connection between these two. It is establishing. जब भी हम लोग wire connection दे रहे हैं, that's why I have to use the wire data type if I am using Verilog language. समझ में आ रहा है guys? कि अभी भी समझ में नहीं आ रहा है? Yes, ma'am. Ma'am, we can also do like register is equal to register, right? Yes, you can do that, but मुझे ये example difference बताना था, इसीलिए मैंने ये वाले screenshots लिए हैं. ओके, मतलब मैंने गूगल पे सर्च किया था कि स्पेसिफिकली ये वाले पॉइंट के लिए मैं क्या करूंगी, इसीलिए. ओके, सो नाउ अगर okay, so now you understand this is the right way to write your Verilog code of your 4-bit half adder using 1-bit adder, 4-bit parallel adder using half adder or 4-bit using 1-bit adder. Okay, now by mistake if you write REG, okay, in your in place of wire, then whenever you are simulating you will get an error known as illegal port connection or port not defined or something like that. Okay, तो अगर ऐसा आ रहा है कि मुझे directly value मिल नहीं रही है, as this is a register that means it is storing the value, but stored value नहीं चाहिए मुझे, तो connection मतलब जो उसकी वैल्यू थी वो वाली वैल्यू यहाँ पर आनी चाहिए, यूज होके मुझे कुछ आउटपुट मिल रहा है. Okay, that's why I will get the error known as illegal port connection or port undefined or something like that. Now this was the problem in my Verilog language. Okay, you should be able to understand when to use REG, when to use wire. That means when to use net kind of variable, net kind of data type, and when to use variable kind of data type. If you are using system Verilog, okay, if you are using system Verilog, आप लोगों को ये सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. Just write logic and you will get the correct answer. इसीलिए हम लोगों ने different type of data type introduce की system Verilog.
ये बात समझ में आ रही है गाइस? कुछ भी हो, फिजिकल कनेक्शन वाला पॉइंट हो, वेरिएबल वाला पॉइंट हो, इनपुट वाला पॉइंट हो, आउटपुट वाला पॉइंट हो, कोई कोड डिक्लेरेशन हो, कुछ भी हो, आई कैन ऑलवेज राइट लॉजिक और मेरा काम हो जाएगा एंड आई विल नॉट गेट एनी काइंड ऑफ एरर। बात समझ में आ रही है गाइस? Yes, ma'am. ओके, एटलीस्ट थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। नाउ यू कैन डू रिसर्च ऑन योर ओन। ओके, मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया, मैंने आपको शॉर्टकट आंसर दिखा दिया, मैंने आपको क्यों ऐसा करते हैं वो दिखा दिया। नाउ यू कैन रिसर्च ऑन योर ओन। ओके, I have given you the right direction. Now you can do research on your own. You can understand this point on your own. I don't mind. Okay, but this is the important point which you need to understand, either by this particular example or by some other different example. Okay, but you need to understand the difference between resin wire and why we are only using logic instead of resin wire and we are not getting any error. Okay guys, from the next time we will see the points like mainly OOP concepts. Okay, as some of you said no, so we'll do data type classification and groups of data object before giving you the test bench of half adder using monitor and agent and environment. Okay, I know this is kind of a new point for you, so we will continue this lab for one another lecture as well. Okay, and I will give you that IEEE document as well, and then after that you can study on your own. Okay guys, yes or no? Okay, ma'am. Okay. Okay, so in the system verilog, the important points to understand are just like any other language: data types, arrays, procedural statements, then flow control statements, then processes, tasks, functions, classes, randomization, coverage, assertions, like that. समझ में आ रहा है guys कि नहीं समझ में आ रहा है? Obviously टेस्ट बेंच कैसे लिखते हैं हम लोग वो पढ़ेंगे, बट टेस्ट बेंच लिखने के लिए we will be using these concepts: array, procedural statements, task, functions, then flow control statements like if and else, case, coverage, randomizations, assertions. तो अगर हम लोगों को ये टॉपिक पहले से समझ में आ रहे हैं, then you will be able to write the test bench. Guys, समझ में आ रहा है? Sorry. Yes or no? Yes, ma'am. Okay. Sorry. हाँ. Let me write the at least जो मुझे याद है, बाकी भी हो सकता है. So if you are interested in learning the system verilog, obviously in the canvas I will create one folder known as self study. उसमें मैं सारी links और interview questions की links या ऐसा कुछ भेजती रहूंगी. But at least आज के लिए try to do the research on your own, something like this. Okay. I know कि as you have understood the verilog, बहुत सारे टॉपिक रिपीट होंगे, like flow control statement, procedural statement, processes, task, functions, ये सारे आप लोगों ने सीखे होंगे. Okay, then अगर आप लोगों ने OOP लैंग्वेज सीखी है तो ऑब्वियसली क्लासेस, फिर assertions, ऐसे भी आप लोगों ने कुछ कुछ टॉपिक लर्न किए होंगे, बट बेसिकली ऐसे आप लोगों को आने चाहिए. Okay, these are the topics if you want to learn the system verilog, the basic system verilog. Okay, at least you should know what do we mean by array, what do we mean by data type, how many types of data types are there in system verilog, or what kind of statements which you will be using like if and else or case, or why the concept of classes was introduced in system verilog. These kind of points you should at least know. Okay, so as now you are in the last year and teaching you as a last year students. Okay, I've already introduced you to the concept of system verilog.
I am telling you, these are the points which you need to cover. Obviously, I will cover, but मैं syllabus के हिसाब से जाऊंगी. Okay, so if the next topic is that write the driver for the ALU, then I will write the driver for the ALU. But whenever we are discussing the driver or whenever we are discussing any components, I have make use of all these possible points. Okay, it is not necessary कि मैंने सारे points use किए हैं. मतलब कुछ points इसमें से मैंने use किए होंगे to write the code. Guys, are you able to follow me? Yes, ma'am. Yes or no? Because as I'm not able to send you that IEEE document in the Google Meet, I will send the document in the WhatsApp group. Either you can learn from that or you can learn from Google. Okay, I don't mind because everybody has its own process. Okay, but you need to at least know some basic terminology of System Verilog before the next lab. Okay, guys? Yes Okay, or no? ma'am. Yes, ma'am. इतना हो पाएगा, guys? कि बहुत ज्यादा हो गया? What about the course you were telling about? Huh? Sorry. Link of the courses you were saying we can do. Courses? Okay. मैं generally Udemy के basic courses follow करती हूँ. I think I had used writing the OVM and UVM test benches. Okay. फिर सिस्टम वेरिलॉग के लिए मैंने एक वेबसाइट यूज की थी, सिस्टम वेरिफिकेशन गाइड या ऐसा कुछ नाम था. ओके, आई विल ट्राई टू फाइंड दैट वेबसाइट बिकॉज मैंने अपने टाइम के लिए भी सब कुछ बुक मार्क करके रखा था. आई विल ट्राई टू फाइंड दैट. मैं जहां से सीखी हूँ ना, मैं आपको वो प्रोवाइड कर सकती हूँ, बट इट इज नॉट नेसेसरी. गूगल पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको. ओके, मैं मेरे ऑप्शंस प्रोवाइड करूंगी आपको कि मैंने ये यूज किया था, आप लोग अपने हिसाब से यूज कर सकते हो. ओके गाइस, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में बुकमार्क किए हुए एक दो वेबसाइट्स और ये IEEE डॉक्यूमेंट तो मेरे पास पड़ा है, वो मुझे याद है. ओके, सो आई विल शेयर दैट डॉक्यूमेंट. Generally, I use the IEEE documents. That is because it is a standardization. Okay, everybody follows that. Because काफी जगह पर क्या होता है, व्हाइट पेपर में, ब्लॉग्स में, obviously like whenever you are an engineer, you won't know everything. Okay, even after getting a job, that based on your projects you will be researching on Google. So it is easier to understand white paper, it is easier to understand blog. Okay, but one of the main disadvantages in following white paper blogs and website is it can be wrong. Okay, so if you are following the standardization format, that means that System Verilog follows IEEE from this 1998 to 2000 or 2012. Okay, उन लोगों ने उसकी रिलीज बाहर की होगी. Okay, if you are, as you are EC people, you will be learning one topic known as communication. Okay, then in communication you will be learning about 3G, 4G, 5G. Okay, then this 3G people has always released 5G releases. Okay, that release 15, release 18, release 19. You should go through that rather than going through the white paper. Obviously it will be difficult to understand, but उसमें कुछ mistake नहीं होगी. That's why I have used the IEEE standard format. But ऐसा जरूरी नहीं है, आप लोग कहीं से भी सिस्टम वेरिलॉग सीख सकते हो. बट ये वाला पॉइंट समझ में आ रहा है गाइस आपको, मैं क्यों बोल रही हूँ? I'm not saying that don't follow white paper or don't study from blogs. Okay, I'm not saying that. I am just saying that if you have an option to follow the standardization format, you should always go for that option. I know it is a little bit difficult, but once you get the hang of it, it will always be correct, or it will always be updated answer. It won't be like a wrong answer or outdated knowledge. Okay, या ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है आपको मैं जो बोल रही हूँ? This point is very much important because now you are at that stage where you will be learning on your own. If you are learning on your own, then these are the some of the shortcut points which you should know. Because अगर नहीं पता होंगे तो presentation, whenever you are giving presentation to your manager, you will be using some outdated knowledge. Okay, so if the manager is good, then he will be able to understand that you are using the references which are very old. Okay, and that's not good in terms of engineering. Your references should always be up to date.
just like if you are writing a paper, okay, research paper, then that means your references should be in the year of 2021 or 2020. Okay, if you are giving the reference of 1980s, then no any respected journal won't publish it. Okay, so please keep your references up to date, whatever references they are. I will try to provide references of my own, in which I learned the basics of system verilog. मैंने भी बहुत नहीं पढ़ा था, सिर्फ इंट्रोडक्टरी अंडरग्रेड का कोर्स किया था, तो मैं उसके आपके लिंक्स भेजूंगी. अगर आपको कुछ नया सीखना है और मुझे नया पता चलता है, then also I'll share it with you guys. Okay guys, let's meet tomorrow. I think we have IoT lecture, so those who opted for IoT. Otherwise, let's just meet for Thursday, Friday for our theory sessions of your verification and testing subject. Now, if you don't have any questions, then you can write your attendance and then you can leave. Guys, don't forget to write the name. Sorry about that. Thank you, ma'am. Thank you guys. Bye-bye. Have a nice day. Thank you, ma'am. મેમ Yes, Juhi. બોલો બોલો. મેમ ઓલું તમે નેટ અને કેની વચ્ચે ડિફરન્સ કીધું તો બીજું રેજ અને વાયરની વચ્ચે ઈ જે વેરીલોગમાં જો જાવું હોય ને અને વેરીલોગના ઇન્ટરવ્યુ ક્વેશ્ચન્સ પૂછવાના હોય ને, તો અમારા ટાઈમે સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન ઈ જ પૂછે, રેજ અને વાયરની વચ્ચે ડિફરન્સ ખબર છે? હવે તમે મારી રીતે ભણો તમારી રીતે, પણ આ આન્સર તમને આવડવો જોઈએ. હા હા મેમ. તો આ ઈ નેટ ની અંદર જ વાયર ને આ રેજિસ્ટર બે આવે ને? ના, નેટની અંદર વાયર આવે. ડેટા ટાઈપ છે ને બે ટાઈપની હોય, એક વેરિયેબલ ટાઈપની હોય અને એક નેટ ટાઈપની હોય. તો નેટ એટલે શું? તો કે ફિઝિકલ કનેક્શન બે મોડ્યુલર અથવા તો બે એન્ટિટી વચ્ચે. ફિઝિકલ કનેક્શન એટલે શું? અહીંથી અહીંયા લઈ જવું, ઈ વચ્ચે સ્ટોર કરવાની જરૂર નથી. તો ઈ શું કામ કરે? તો આપણે એમ કહી શકીએ કે આને તો વાયર જ કહેવાય ને મેમ. આપણે બે વસ્તુ જોડી કઈ રીતે? ઇલેક્ટ્રોનિક્સમાં વાયરની મદદથી, રાઈટ? તો એટલે આપણે નેટના ડેટા ટાઈપને વાયર નામ આપ્યું. પણ ઘણી વખત આપણે વેલ્યુ સ્ટોર કરાવી પડે વેરિયેબલ તરીકે. સોફ્ટવેર લેંગ્વેજમાં આપણે શીખતા વેરિયેબલ, રાઈટ? તો સ્ટોર બી કરાવી પડે વેલ્યુ. જો સ્ટોર વેલ્યુ કરાવી પડે એનું નામ આપણે વેરિયેબલ આપી. તો જે વેરિયેબલ આપે છે ને એના માટે આપણે ડેટા ટાઈપ યુઝ કરી છીએ REG, રજિસ્ટર. ઓકે સમજાઈ ગયું. આ મેઇન ડિફરન્સ છે. તમે તમારી રીતે ગોતી શકો છો. ઓકે, કારણ કે હવે તમે એ સ્ટેજ આવી ગયા કે તમને મારું ન સમજાય, તમે ગૂગલ કરી શકો. બટ મારે તમને ક્વેશ્ચન કેવો પડે કે આ ડિરેક્શન છે ભાઈ, તમારે આના ઉપર હાલવાનું છે. મેં તમને ડિરેક્શન આપી દીધું, તમારે પછી જેમાં જે કરવું હોય, બરાબર? ઓકે, તો મેમ આપણે વેરિફિકેશન જે આપણે ભણી છે આ સબ્જેક્ટ, તો ફિઝિકલ ડિઝાઇન વેરિફિકેશન માં જ આવી જાય કે અલગ? ફિઝિકલ ડિઝાઇન અલગ બેટા. આપણે પહેલા તો ડિઝાઇન કરવી પડે. વેરિફિકેશન એટલે શું? કે ડિઝાઇન બની ગઈ પછી ડિઝાઇન સાચી બની કે ખોટી બની, ઈ વેરિફિકેશનમાં આવે. તો ફિઝિકલ ડિઝાઇનમાં આપણે ડિઝાઇન બનાવીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, હાફ એડર, ફૂલ એડર, ALU, તમને જે યાદ આવે એ તમારે બનાવવાનું. હવે એ સાચું બન્યું કે ખોટું બન્યું એના માટે જે યુઝ કરવું પડે એને વેરિફિકેશન કહેવાય. અને વેરિફિકેશન કઈ રીતે થાય? તો કે ટેસ્ટ બેન્ચ લખીને. તો મેમ VLSI ની જોબમાં જવું હોય હા, તો એમાં આપણે પર્ટિક્યુલર ડોમેનમાં જવું પડે ને? સપોઝ કે ટેસ્ટિંગ. યસ, એટલે જ મેં તમને કીધું હતું. મને એમ કે આ બધું બધાને ખબર હશે એટલે હું ફટાફટ બોલતી જતી હતી. હવે ક્યારેય પણ હું ફટાફટ બોલતી જાઉં ના ખબર હોય ને ત્યારે જ મને ટોકવાની, કારણ કે મને ન ખબર હોય. શું હું તમારી ક્યારેય સીસી નથી રહી? આઈ નો આઈ એમ યોર મેન્ટર, બટ આપણે કોઈ દિવસ એવી રીતે વાતય નથી થઈ. નથી. હા, ઓકે, સો મને ખ્યાલ ના હોય તો હું છે ને શું કરીશ, એક છે ને મેન્ટરની એક મીટિંગ જ રાખી દઈશ, મેન્ટર મેન્ટીઝની, જેમાં તમે મને કહી શકો કે તમારે શેમાં જવું છે. એઝ મારો જે ડોમેન છે ને એ VLSI, RF અને કમ્યુનિકેશન છે, તો હું એમાં તમારે જવું હોય તો હું તમને કહી શકું. તો મારો મેમ ડોમેન એવી રીતે હું કર્યું તો તું શું જોઈ? તેમ તમે કેમ કહો છો કે આપણે મેન્ટર મીટિંગ કરીને ડિસાઈડ કરશું કોને કઈ ફિલ્ડમાં જવું છે? ના ના ના, એમ નહીં. ઈ હું તમારે વધારે જાણી લઈશ એમ. તો હું શું, મને ખબર પડે. આ મને ખબર નહોતી એટલે ફટાફટ વહી ગયું. કારણ કે VLSI માં ઘણી બધી હોય. જો RTL કોડિંગ વાળી જોબ હોય, પછી SOC ડિઝાઇન વાળી જોબ હોય, સમજાય છે? પછી વેરિફિકેશન વાળી જોબ હોય. આવું કાંઈ જ ન કરવું હોય તો વેલિડેશન વાળી જોબ હોય.
ઘણી બધી જોબ હોય તો આપણે જેમાં જવું હોય એના માટેના અમુક કોર્સિસ કરવા પડે આપણે. અને મેમ પછી આમાં કરિયર સારું છે VLSI માં? યસ બેટા, VLSI માં કરિયર સારું છે. આઈ નો કે ગુજરાતમાં બધાને એવું છે કે સોફ્ટવેર જ કરાય, સોફ્ટવેર જ કરાય. બટ પ્લીઝ આઈ નો, બટ પ્લીઝ ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે US માં તમે લોકોએ જો VLSI અને RF મેજર રાખ્યું હોય, તમને મહિનામાં જોબ મળી જાય ગમે ત્યાં. ઓકે, સો રાઈટ. સારું છે. યસ, VLSI ફિલ્ડ ઇઝ ગુડ. ઓકે, તો VLSI કયા કયા ફિલ્ડ અત્યારે સારા કહી શકીએ આપણે? તો કે એક જે છે ડેટા સાયન્સનું જે ફિલ્ડ છે ને, IT નું, બિગ ડેટા અને મશીન લર્નિંગ, એ વાળું ફિલ્ડ સારું છે. પછી VLSI નું ફિલ્ડ સારું છે. RF માં તમે અત્યારે જાવ ને તો જોબ મળી જાય, રિસર્ચમાં આવે. RF ઇઝ એટ એવો પોઈન્ટ આવી ગયો છે કે આપણે વધારે રિસર્ચ કરવું પડે, બટ જોબ વાઇઝ RF માં જોબ મળી જાય. યસ, બધા RF માં કઈ ટાઈપની જોબ મળે તો કે તમે જે માઇક્રોવેવ ભણો છો ને અત્યારે, હા, તો એમાંય તમને જોબ મળી જાય. તમને HFSS સોફ્ટવેર આવડતો હોય, પછી તમને માઇક્રોવેવ AWR ઓફિસ આવડતી હોય, કે પછી તમને ADS સોફ્ટવેર આવડતું હોય. ઓકે, આમાંથી ગમે તે એક સોફ્ટવેર આવડતું હોય. ધેટ મીન્સ તમે લોકો કપલર બનાવી શકો, પાવર એમ્પ્લીફાયર બનાવી શકો, લો નોઇઝ એમ્પ્લીફાયર બનાવી શકો, આવા બધા કમ્પોનન્ટ્સ ડિઝાઇન કરી શકતા હોય. પછી લિંક ઇક્વેશન આવડતું હોય તો તમે લોકો એન્ટેનાના લોસીસ કમ્પેર કરી શકતા હોય. તો આવા બધાની બી જોબ અવેલેબલ હોય. ઓકે, પછી કમ્યુનિકેશન સાઇડ ઓબ્વિયસલી તમને 5G ની જોબ મળી જ જાય. 5G માં તમને બે જોબ મળી શકે. એક બેઝ એન્ટેના વાળી જોબ મળી શકે, જેમાં હાર્ડવેર નોલેજ જરૂરી છે. એક 5G કોર ની જોબ મળે, જેમાં સોફ્ટવેર નોલેજ જરૂરી છે, મતલબ નેટવર્કિંગ નું ફિલ્ડ આવે એમાં. પછી VLSI માં આવી રીતે બધું આવે. તો આવા પ્રકારની જોબ્સ અવેલેબલ છે. તમે કેને ટાર્ગેટ કરો છો ને એ પ્રમાણે તમારે અત્યારથી એમાં ઇન્ટર્નશિપ લેવી પડે. અત્યારે નહીં, બટ એટલીસ્ટ ટાર્ગેટ કરવું પડે લેવાની. ઓકે ઓકે ઓકે, સો આઈ થોટ કે તમને આ બધું નોલેજ ખબર હતી, એટલે હું ફટાફટ જતી હતી. કાંઈક એવી મીટિંગ રાખી દેશું તો મને આઈડિયા આવે. ખબર હોય તો મને ખબર નથી. ઓકે, કાંઈ વાંધો નહીં, આપણે એવી કંઈક મીટિંગ રાખી દેશું બધાય માટે 1 to 1. એક દિવસ હું ફ્રી આવીશ ને ત્યારે તો હું પૂછી લઈશ. પણ આ વખતે હું સેલ્ફ સ્ટડીમાં તો કંઈક આપતી જ રહીશ. હું કેનવાસ ગ્રુપ બનાવી લઉં ને પછી તો તમારે જો વેરિફિકેશનમાં જોબ જોતી હોય તો સેલ્ફ સ્ટડી વાળું જોયા કરવાનું કે ઓ મેડમ આ નવા ક્વેશ્ચન્સ રાખ્યા છે તો હાલો આપણે ગૂગલ કરી અને આન્સર ગોતી લઈ. તો એની એક નોટ કે તમે જે કંઈ પ્રિપેર કરતા હોય, તમે લેપટોપ યુઝ કરતા હોય, તમે યુઝ કરી શકો. બટ એવું કંઈક રાખવાનું એમ, સો તમને ઇન્ટરવ્યુ ટાઈમે કામ લાગે. ઓકે, ઓકે, ટ્રાય કરી જોજો ગોતવાની. ના મળે તો મને કહેજો કે મેમ નથી સમજાતું. બરાબર? હા હા, ઓકે, બાય જુહી, બાય, થેન્ક યુ.